Good evening, everyone. In our previous class, we studied depreciation valuation methods. We did the configuration for the valuation methods and we created a depreciation key. So today, in today class, we will activate the depreciation areas for our asset classes and we will create an asset. So in the first hand, we will first activate the depreciation for our asset class. For that, we have to follow the path SPRO in search command area, then SAP reference IMG. Again, we will follow the same path, financial accounting and asset accounting. Asset accounting. Then we have general valuation area. Here you can see determine depreciation areas in the asset class. अच्छा अगर हम इसको depreciation area एक्टिवेट नहीं करते तो हम जब अपना एसेट क्रिएट करेंगे उस वक्त हमारे पास हमारे जो एसेट क्लासेस हैं वो शो नहीं होंगे मैं आपको वो चीज़ बिफोर वी डू द डिटर्मिनेशन ऑफ depreciation areas I will show you अगर हम एसेट क्रिएट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन कोड फॉर क्रिएटिंग एन एसेट इज AS01. We will click on this one and now we have a master data. You can see create asset initial screen, master data for the asset and depreciation areas. So in asset class, if we click on drop down and give our company code, okay, so you can see हमारी एसेट क्लास जो हमने मेंटेन की है अपनी पर्टिकुलर कंपनी के लिए इट्स नॉट शोइंग हेयर रीजन बीइंग द इंफॉर्मेशन व्हिच इज अवेलेबल हेयर इट्स अ स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन सेट बाय डिफॉल्ट इन द एसएपी सिस्टम तो इसके लिए एसएपी सिस्टम ने डेप्रिसिएशन एरियाज ऑलरेडी डिटरमिन किए हुए हैं एक्टिवेट किए हुए हैं हमें अपनी कंपनी की जो एसेट क्लास हमने मेंटेन की है उसके लिए डेप्रिसिएशन एरिया जो है वो एक्टिवेट करना पड़ेगा फॉर दैट रीजन हम इस स्टेप के ऊपर आते हैं और अपना जो है वो डेप्रिसिएशन एरियाज एसेट क्लास में डिटरमिन करते हैं तो उसके लिए जनरल वैल्यूएशन and then determine depreciation areas in the asset class. We will execute this node. So you can see asset class here. We will search for our company. Here you can see boiling plant, DX01, filtration plant, mixing plant, packaging plant. So I'll select the first one and we will open this one. So here in this layout, you see, Zahid, if you remember, you were asking about the ledgers and everything. यहाँ पे चार ledgers वो accordingly आ रहे हैं Yeah, 0L, exactly. RL, EE and S1 तो इन सब एरियाज को बेसिकली हमें एक्टिवेट करना है तो ये सेकंड कॉलम जो है बेसिकली मार्क होने का मतलब है इट इज मार्क्ड एज डीएक्टिवेटेड द डेप्रिसिएशन areas are marked as deactivated so we have to activate these for all four ledgers जो हमारी कंपनी के लिए चार ledgers हैं हमें उन चारों ledgers में depreciation area को activate करना है so we will uncheck these boxes one by one and we will click on enter अच्छा अब हमें लेआउट देना है आप लेआउट जो है वो आपको याद होगा हमने एक स्क्रीन लेआउट सबके लिए मेंटेन किया था अच्छा यहाँ पे name of screen layout depreciation on main asset number level depreciation on asset sub number level and screen layout of this is defined by somebody standard जो है वो first two है हम depreciation on asset sub number level ले लेते हैं कि sometimes हम एक asset का sub asset भी create करते हैं तो you can choose either one of it but better if you go with the second one but it depends on the company policy if you want to go with the main asset number level or sub asset number level. So I'll go with this one. Again, two, again enter, third one, enter. Okay. So now see layout is assigned. Now we have to assign a depreciation key. In our previous class, we created a depreciation key. We will assign that depreciation key to all these four ledgers one by one. So we'll select from the drop down we will search for our company's uh, depreciation key. I think it's
That's it. Whether it's there, I believe DSLX. Sorry, DSLX. Yes. Was this ours? Are you sure? So, I'm not sure. Oh, okay. Just a second. Let's go and search this out. Yes, screen stuck. Screen is stuck, sir. SAP is not responding. Yeah. System is not responding, sir. SAP. Depreciation key. SPRO. SAP reference IMG. And then financial accounting. Asset accounting. Depreciation. Valuation methods. Depreciation key. And here we maintained our depreciation key. We will search out. Hopefully we saved our working when we maintained that one. It's DPX. This one. Okay. So click here, financial accounting. Sorry. Asset accounting, general valuation, determine depreciation areas. Area is logged. We will remove all these. Oh my God. Okay. Again. Financial accounting, asset accounting, and then general valuation, determine depreciation areas. So we will find our boiling plant here, depreciation. Okay, we will mention, we'll first uncheck these boxes as we just discussed earlier. PX. Why this is not showing here? Okay. Because it was showing inactive here. Inactive, yes. In depreciation line. Yes. I've seen that one. You have to activate. Okay. Now it is activated. I think we need to refresh this page. Boiling plant, depreciation key. Sorry. What is the reason? Still not showing. It is showing active. I think we have to save it first. It is already saved. I did it. जरा हमें assignment paper please, come to assignment of calculation method please. Sorry, sir. हम वहाँ पे previous screen open कीजिए. Okay, sir. 1 second.
Yes, sir. यहाँ पे जाइएगा assignment of calculation methods. Yes. अच्छा, define balance method इसमें और okay, good. This is very good. Okay, sir. So Okay, now we will assign this one px depreciation key to all four ledgers px, and we will save it. Okay. Now if we go and create our asset, we can find this information in our asset class. I'll show you here now. See, it's here, boiling plant dx01. प्रीवियसली जब हम इस स्क्रीन को एसेट क्लास देख रहे थे उस टाइम ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी. द रीजन बीइंग कि हमें डेप्रिसिएशन एरिया डिटरमिन करना था उस एसेट क्लास के लिए. डिटरमिन करने का मतलब हमें उसको एक्टिवेट करना था. एक्टिवेट करने के साथ स्क्रीन लेआउट उसको असाइन करना था. देन वी आल्सो नीड टू असाइन द डेप्रिसिएशन की. So the first topic which we were discussing in our class वो था एक्टिवेट करने का. we have completed. Now the second one is how we create an asset. So the information for for creating an asset is, first I will show you the path and I'll also tell you the transaction code. For creating an asset we will stay on the first page, accounting, drop down, financial accounting, drop down, fixed assets. So drop down. Here we have assets and we have postings. So we are right now we are creating an asset. So we will go on the second step and select on the drop down. Here you can see create, change and display. हमें एसेट क्रिएट इस एरिया में करना है. डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास एसेट एक्सप्लोरर है, और अगर उस एसेट की कोई इंफॉर्मेशन एडिट करने की रिक्वायरमेंट है we will do in the change area. So right now we are creating an asset. We will click on here and you can see asset and asset. If we have a group then we will go here. If we have a single asset, single company asset, we will go with the AS01. So AS01 basically is the ट्रांजैक्शन कोड. या हम पाथ भी फॉलो कर सकते हैं जो हमने अकाउंटिंग अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉलो किया. आइदर we type AS01 in search command and press enter, it will take us to the page where we will create an asset. Okay, so same thing, create asset initial screen. First we will give our we will select our asset class ds, this one. Then company code, number of similar assets. Number of similar assets अगर आपके पास उस एक फॉर एग्जांपल हमारे पास बॉइलिंग प्लांट्स की बजाय फर्नीचर है और हमने डिफरेंट हमारे डिपार्टमेंट्स के लिए फर्नीचर बाय किया है, एडमिन डिपार्टमेंट के लिए और हमने अपनी फाइनेंस के लिए. इट्स अ सिमिलर टाइप ऑफ फर्नीचर. तो हम यहाँ फॉर एग्जांपल हमने 3 डिपार्टमेंट्स के लिए लिया है तो हम 3 टाइप करेंगे. उसकी स्पेक्स ऑब्वियसली सेम होनी चाहिए तो सिमिलर 3 एसेट्स क्रिएट हो जाएंगे और हम उसके अकॉर्डिंगली उनको मेंटेन कर सकते हैं. लेकिन अगर एक ही वन ऑफ आइटम है विद ड्यू टू इट्स स्पेसिफिकेशंस तो हम यहाँ 1 लेंगे. सेकंड रेफरेंस एरिया है. रेफरेंस एरिया बेसिकली अगर हमारे पास सिस्टम में कोई ऑलरेडी क्रिएटेड एसेट है, हम उसको कॉपी करना चाह रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को, तो हम यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन कॉपी करेंगे, सब नंबर देंगे, कंपनी कोड देंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन एंटर. तो वो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को कॉपी कर कर पेस्ट करेगा और हमें उसमें एज रिक्वायर्ड जो चीजें चेंज करनी है हम उसमें कर सकते हैं. So right now we don't have any asset in the system, so we will create by this side. We will click on master data or enter. Information about last fiscal year is incomplete. Okay, now this is an error. Basically information जो है वो complete नहीं है fiscal year के लिए. The reason is ये हम सब इसको face करेंगे. I'll show you in my errors sheet. Okay, this is the first one. See, information about last fiscal year is incomplete. तो इसके लिए we have a path here. We will go on periodic processing, year end closing and undo.
we have to mention the year here in this area. Okay, so whenever you people maintain this one, you will face this. So we will go on fixed assets, periodic processing, and then fiscal year change. Just a second. Year end closing, sorry, not fiscal year change. Year end closing and FAACMB execute undo. So we will double click on it. See, हमारी कंपनी DX01 है, 0L के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपना देना है, तो फिजिकल ईयर no nothing is mentioned here. Okay, so we have to give this one. So we will click on change, we will mention year here. Okay, and we will click on save. Period determination is not possible on date 7th July. For this one, data cannot be saved. For depreciation key with period control FX and period control method, no depreciation period could be determined on 30th July. Maintain the previous assignment for the period control. Okay, so this is a new error. We will fix this one. Click on this. Define calendar assignments. Oh, I believe we follow this one, right? What was our fiscal year? It was Jan to March, right? Let's find out. Is everybody there? Yep. Yes, we are here. Okay, okay. Still you take Nobody was saying anything. That's why I asked. Okay, assign company go to fiscal year, but I'll find out from here. TX01. R1 was FX. Period. This year 2025. Month July. Day 30. Period. We will save this one. Now let's go and see if we can maintain this information now. We're creating an asset. Just close the unnecessary pages. Accounting, financial accounting, fixed assets, periodic processing, year-end closing, execute, and 0L. We will click here, then we have to click on change display. We will maintain the year and we will save. See, now we can save this one. So it says no segment for legacy data transfer was created yet in a company code. It's a warning. We can later on see this one. I'll take a screenshot of it. Okay. We will later on check with this one and now we will save. So now you can see जब हमने इस पेज को ओपन किया था और 0L लेजर के लिए इंफॉर्मेशन देख रहे थे, there was no closed fiscal year defined, there was no last day in closing fiscal year defined. So that was the error. System asked us to maintain the information first. So we will do for all 4 ledgers one by one. Now we select, so it's picked up automatically by 4. So हमारे 4 ledgers हैं, 0L, EE,
you can see information is maintained for all four ledgers, RL and S1. Okay, now we'll go and create an asset AS01. सर ये मीटिंग पॉज होने वाली है तो अभी मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ. Now we will create an asset. We'll click on enter. Okay, so here in this page we have to maintain the information for an asset. We are purchasing for if you remember, Abdullah bhai shared a page. Let me grab that information. We had a, yes, I have it here, 1 second. So in boiling plant we have two assets, water pump and level indicators. So water pump TX01. देन अकाउंट डिटर्मिनेशन, अगर आप सबको याद होगा हमने एक अकाउंट डिटर्मिनेशन कोड क्रिएट किया था और उससे हमने अपना जीएल अकाउंट लिंक किया था. बेसिकली एस वाटर टैंक का जो जीएल अकाउंट है वो इसके साथ लिंक है और उस क्लास के अंडर हमारे पास दो एसेट्स आएंगे. सो जीएल अकाउंट, देयर विल बी वन जीएल अकाउंट. ऑन ऑफ है चेकिंग. ऑड है सर. ओके. ओके, नेक्स्ट जो है टाइम डिपेंडेंट, इसमें हमें अपना कॉस्ट सेंटर्स, बिजनेस एरियाज इंफॉर्मेशन देनी है. देन वी हैव असाइनमेंट्स, वी कैन स्किप दिस वन फॉर नाउ. और रीजन, लीजिंग, इन सब के लिए हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी. देन वी हैव अ डेप्रिसिएशन एरिया. अभी हम डेप्रिसिएशन की जो है वो अपने लेजर्स को असाइन कर आए हैं. अब हमें यहाँ पे मेंशन करनी है यूजफुल लाइफ. फॉर एग्जांपल हमारे एसेट की यूजफुल लाइफ जो है बॉइलिंग प्लांट की वो 10 ईयर है. हम 10 ईयर लेते हैं. अगेन इन दिस लेजर 10 ईयर, 10 ईयर, 10 ईयर. This is useful life in periods. Periods mean months. So we are maintaining a useful life in years. So we don't need to do this one. We don't need to maintain this one. Now we will click on save. So here you can see at the bottom, asset 101 is created. So anybody asking a question? Please come to change and go to cost center, because when you create purchase order of fixed Sure, asset, sir, you have I'll to do that use cost center over there. I'll do that one, sir. Just to keep the simple, उसको अभी रखा है इसने. Okay, and I want to show where we can see this asset. We'll click on display. See, asset number 101, 0 reflects the sub number. So we don't have any sub asset for this particular asset right now. So this one, fiscal year 2025, and asset is created in the system. अब इसकी वैल्यूज नहीं है. अगर आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आए कि एसेट सिस्टम में बना है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ना कोई एक्विजिशन कॉस्ट आ रही है, ना कोई डेप्रिसिएशन शो हो रही है. रीजन इज कि अभी हमने इस एसेट को बाय नहीं किया. फॉर दैट वी नीड अ वेंडर कॉन्फ़िगरेशन. इफ यू वांट टू बाय एन एसेट वी आल्सो नीड अ वेंडर कॉन्फ़िगरेशन. सो we will jump on vendor configuration, then we will buy an asset. Right now हमने अभी सिर्फ एसेट को सिस्टम में क्रिएट किया है और वो हमारा एसेट यहाँ पे शो हो रहा है. ओके, एनी क्वेश्चंस? No. Okay, so as sir just highlighted, we will assign cost centers. So sorry. Okay, we have production here. Shop. सर इसका जो है ना आमतौर पे वॉइस एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दूं. 2023 जो वर्जन है, देखिए जब आपके कॉस्टिंग शीट आपने कैलकुलेट करनी है ना, कॉस्टिंग शीट जब आप उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, तो अगर आपने कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर को कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा तो वहां पे वेरिएशन प्रॉपर डिस्प्ले नहीं हो पाएंगे. ये इसका वहां पे एक इशू आएगा. तो मैं जस्ट रिकमेंड करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट से जो भी आगे मतलब कि आप जब एंट्री स्पॉट करेंगे ना, तो उसके लिए भी आपको कॉस्ट सेंटर की जरूरत पड़ेगी. तो ये कम्प्लीमेंट्री हो चुके 2023.
उसमें सर्वर है. Please continue. Okay, we will select production manager, shop floor, assembly, packaging, and maintenance. We will go with this one, assembly, and we will save it. Do you want to override the existing time data? Do not display this dialog in future. Yes. Okay, so the cost center is updated in the system. So this is how we create an asset and how we can see that asset created in our system. Uh, do you people want to study further, or it's enough for the today? Because now we also need to go on the vendor configuration for buying an asset. I believe आज it's के लिए enough for काफी today. एक नया टॉपिक आ जाएगा. I think this is enough for today because vendor is something else, and we will start in next lecture inshallah. Carefully. Okay, everyone. So today we have completed our lecture. In the next class, we will jump on to the new configuration area for vendor, and then later on we will come back in asset area and buy an asset. Thank you so much and goodbye.